Hello children, we are going to discuss about refractive index in this class. As you already know about refraction of light, that the bending of light when the light ray goes from one optical medium to another, and this bending is called as refraction of light. In my previous video I have given some examples also related to this. So we are going to discuss about refractive index, that is our topic. So the first thing which comes to our mind is, what is a refractive index? होता क्या है refractive index? तो जब भी लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है, दोनों ऑप्टिकल मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. When light goes from one transparent medium to another transparent medium with different optical densities, it bends. Now to what extent it bends, that is given as refractive index. Okay, so we say the refractive index is the ratio of the speed of light in the first medium to the speed of light in the second medium. Depending on the optical density of a medium, the speed of light changes. So we say that refractive index, which is expressed as mu or n. Mu or n is the representation of refractive index. This is equal to the speed of light in first medium or medium 1 to the speed of light in the second medium. तो अगर हमें ये लिखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1 2 n 1 2. I would say, what is the refractive index of, suppose I say, what is the refractive index of glass with respect to air, or what is the refractive index of water with respect to air? इसका क्या मतलब हुआ? ग्लास आपका सेकेंड मीडियम हो गया, वाटर आपका सेकेंड मीडियम हो गया. क्यों? क्योंकि जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड में जाएगी तभी तो बेंडिंग होएगी. एक ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाती है या रेयर मीडियम में जाती है, तो उसमें बेंडिंग होती है, स्पीड चेंज होती है, तो बेंडिंग होती है. तो हम हमेशा यही पूछते हैं, refractive index of second medium with respect to the first medium. So if I say, what is the refractive index of glass with respect to air, मतलब क्या हुआ? लाइट एयर से ग्लास में जा रही है और ग्लास आपका सेकेंड मीडियम है, तो उस केस में आप ये क्या लिखेंगे? सपोज यू हैव टू राइट डाउन what is the refractive index of glass with respect to air. So you will write down speed of light in air to the speed of light in glass. अब यहाँ देखिए, क्योंकि स्पीड है ये मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गई, ये भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गई, तो क्या हुआ? दोनों कट गए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स does not have a unit because it is the ratio of the same physical quantity. So the units in the numerator and the denominator will get cut, and we would say that it has no unit. So it's just a number given to you. Okay, refractive index for a given pair of media would depend on the bending of light
when the light goes from one optical medium to another optical medium. Okay. Now, secondly, I'll just write down the speed, which you can just have an idea. The speed of light in air is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. And the speed of light in water is equal to 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. So if I say that the speed of light in vacuum is also 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed air में slightly less होगी as compared to the speed of light in vacuum, but it is almost equal. So we take it as 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, and the speed of light in glass is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second. अब अगर मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, सपोज मैंने बोला फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो मैं क्या लिखूंगी? इमीडिएटली इट कम्स टू अवर माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लास एज द सेकेंड मीडियम, एयर एज द फर्स्ट मीडियम. तो मैं इसको क्या लिखूंगी? स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in glass. Substituting the values which I have already told you. क्या होगा बच्चों? 3 into 10 to the power 8 meter per second upon 2 into 10 to the power 8 meter per second. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ NGA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ऐसे लिखा जाता है, या तो ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए. तो ये आपका क्या आ गया? 10 टू द पावर 8 कट गया, 3/2 आ गया, मीटर पर सेकेंड कट गया, बिकॉज एज यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, सो इट विल बी 1.5. व्हाट डज इट मीन? It means that the refractive index for this particular pair of media, air and glass, is equal to 1.5. Next is absolute refractive index. Now what is absolute refractive index? Absolute refractive index वो होता है जिसमें कि first medium या तो हम air लेते हैं या फिर हम वैक्यूम लेते हैं, बिकॉज हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट इन एयर. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अगर मैं बोलती हूँ विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्या होगा? What will it be? Speed of light in vacuum to the speed of light in air. क्या आ गया ये? 3 into 10 to the power 8 upon 3 into 10 to the power 8, that is 1. So absolute refractive index of air with respect to vacuum would be 1. So this absolute refractive index, I am again repeating, is the term used when we have the first medium as air or vacuum. अगर मैं और इसको हम refractive index भी बुला लेते हैं.
Okay, if I say refractive index of glass, it's automatically I'm saying, if I'm not writing with respect to water or any other medium, if I'm just saying what is the refractive index of glass, इसका मतलब फर्स्ट मीडियम मैं एयर ले रही हूँ और सेकेंड मीडियम मैं ग्लास ले रही हूँ. ओके, सो दैट इज ऑल्सो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हियर. स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in glass. This is what is the meaning of refractive index. So always बच्चों remember that when we say refractive index of जिसका भी बोलेंगे that will be the second medium, क्योंकि bending कब होगी, जब light एक medium से दूसरे मीडियम में आएगी. ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट द बेंडिंग वुड टेक प्लेस एंड ऑफ कोर्स वुड डिपेंड अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टू मीडियम्स. थैंक यू.